दिस इज़ DJI Mavic Mini। जब भी आप ड्रोन खरीदो तो ये मत सोचना कि कौन से कंपनी का ड्रोन लेना है, बस ये सोचना कि DJI का कौन सा ड्रोन लेना है। जब बात आती है फोटोग्राफी एंड फिल्म मेकिंग की, ड्रोन इज समथिंग विच कैन मेक अ ग्रेट डिफरेंस इन द क्वालिटी ऑफ कंटेंट दैट एनी फिल्म मेकर वांट्स टू मेक। एंड इफ यू आर एन एस्पायरिंग यूट्यूबर और अ फिल्म मेकर, देन बजट इज द मेन कंस्ट्रेंट। और ऐसे लोगों के लिए DJI Mavic Mini एक मसीहा है। अगर आपके दिल में ये सवाल पैदा हो रहा है कि मैं ये क्या बोल रहा हूँ, आप लोगों ने एक ऐसे वीडियो पे क्लिक किया है जिसका नाम है DJI Mavic Mini, तो आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मैं यहाँ पे पैराग्लाइडिंग करूँगा? हाँ। और ये मैं आसमान की ऊंचाइयों में बहुत ऊंचे, पूरा कोहरा ही कोहरा। The first thing that you notice about this drone is the size of the drone. The drone is very compact, easy to carry and is lightweight. To be specific, the weight of the drone is 249 grams. जिसका मतलब अगर आपको ड्रोन इंडिया में उड़ाना है तो you don't need to have any license from the Indian government. Because as per India's rules and regulations, if the drone is about 250 grams, तभी आपको इंडियन गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ती है कि इस ड्रोन को यहाँ पे उड़ाया जाए। तो इन दिस केस वो झंझट आपके दिमाग से हट जाएगा। सो अगर मैं इस चीज़ को समराइज़ करूँ, सो द डिज़ाइन, द साइज, इन ऑल अदर एस्पेक्ट्स, द एस्थेटिक्स, एवरीथिंग, द ड्रोन इज सुपर कूल। Stuff in the kitchen. Speaking about the camera quality, it's very good, but its disadvantage is it cannot shoot 4K, but it can shoot 2.7K and 1080p at 30 and 25 fps. I generally prefer using 30 fps since it aligns with the television broadcast standards. Camera comes with a 3-axis gimbal and footage एकदम stabilized मिलती है, even when there is high speeds. And speaking about some of the features in the drone, it comes with a lot of maneuvers such as circle, ellipse, vertical, straight line, etc. जिसके कारण even a beginner or an intermediate person who is trying to learn a drone can get very good shots. On the other hand, one of the main difference between the DJI Mavic Mini and other DJI drones is there is no object tracking in DJI Mavic Mini, so which is a kind of disadvantage. So overall, speaking about the camera quality, apart from the 4K disadvantage, it will give you a super smooth and a super clean cinematic footage. Even in the night, the video quality is super cool. लेकिन नहीं आता, ये देख लो। Coming to the battery life, the company claims that on a single charge we can fly up to 30 minutes. But in my case, I have got almost 23-24 on an average on one single charge. But it depends on many other scenarios. जैसे कि आप जहाँ पे उड़ा रहे हो वहाँ पे विंड स्पीड कितनी है, आप किस मोड में उड़ा रहे हो, is it the cine smooth mode or is it the normal mode or is it the sports mode? So it depends on all these factors. And मैं सजेस्ट करता हूँ कि if you are using the drone for film making or YouTube, you at least need to have 2 minimum batteries, extra batteries. क्योंकि एक बैटरी अगर आप यूज़ कर रहे हो तो ड्रोन ऊपर जाएगा, नीचे आएगा तो बैटरी इज़ गॉन. सो in Flymore combo you get 2 more extra batteries which will increase your flight time between 1 hour to 1.5 hour. So this is an added advantage. तो अगर मैं बैटरी की बात करूँ तो वो उतनी अच्छी भी नहीं है, उतनी बुरी भी नहीं है, बट फॉर दिस सेगमेंट, फॉर दिस प्राइस सेगमेंट, दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट. Speaking about the range of the drone,
The range is 4 kilometers and the height up to which it can fly is 500 meters from the ground. Now to be honest, आप इतना दूर उड़ाओगे नहीं या आप इतना हाइट भी नहीं उड़ाओगे, because unlike other DJI drones जिसमें no obstacle avoidance होता था, in this case it is not there. So if the drone goes out of your visibility and it is in some dense forest or anywhere, there are 99% chances that your drone might crash. So इतनी ज़्यादा range, it is very rare that you might use it. भाई लंबी राइड नहीं करेगा अपन बस अब। One of the main disadvantages of DJI drones is the stability. On high wind speeds, it is very difficult to handle the drone because बहुत lightweight है और wind speed के कारण बहुत imbalances आ सकती है और there are chances that you might lose the drone. ऊपर कर लिया, ऊपर कर लिया पैर और ऊंचे कर लिया। अब इससे ज़्यादा ऊंचे नहीं होगा। क्या हुआ यार? कुछ नहीं हुआ भाई, लैंड करना है अब अपने को। So overall, to summarize about the DJI Mavic Mini, I would say that DJI Mavic Mini is one of the best drones in this price segment, but with few limitations. One being इसमें 4K footage नहीं है, so that could have been there. Secondly, in high wind speeds, I don't think this drone would be able to sustain such high wind speeds. So that is something which has to be looked on. So apart from all this, what are my requirements? My requirements is 1, the cinematic footage, 2, the quality of the video or the image that I want to capture. So that is being served by this drone. So apart from those limitations, it is top notch. And on the other hand, I would like to say that irrespective of what equipment you are using, what camera you are using, whether you are using drone or not using the drone, the most important thing is to create good content, have good storyline, good concept. If you don't have any of this and you are investing on the costly equipments, the output won't be good. So from the good content, I mean literally good content. YouTube पे आपको आजकल ऐसा कंटेंट मिलेगा जिसको देख के शायद अंबानी जी भी बोले कि जियो शायद इतना भी सस्ता नहीं करना चाहिए था। मेरा देश, मेरा देश, मेरा देश।